Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So guys, in today's video I want to share with you all that what I do every single night before going to the bed. From morning to evening, जितना भी dust है, जितना भी जो गंदा चीज़ है, जितना भी air pollution, जितना भी कुछ भी है, सब आपको face में आ जाता है, जो dullness है वो भी आ जाता है. To remove that, what I do, what I use the product, I want to share with you all कि मैं क्या क्या use करता हूँ. Because every single day, रोज घर पे आने के बाद आफ्टर वर्क कोई भी मतलब रोज कुछ एक पैक या कुछ स्किन केयर रिलेटेड कुछ बना नहीं सकता है बिकॉज इट्स टेक टाइम यार, बहुत टाइम लेता है. तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विद यू ऑल कि मैं क्या करता हूँ जब मेरे पास टाइम नहीं होता है. बट आई हैव टू क्लीन माई फेस डीप क्लीन. सो आई थिंक वी शुड नॉट रियली वेस्ट आवर टाइम. लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो एंड आई विल शो यू व्हाट आई डू व्हेन आई डोंट गेट टाइम टू मेक एनी काइंड ऑफ DIY थिंग्स. सो प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, कैसे यूज़ करता हूँ, कैसे करके मैं अपना फेस क्लीन करता हूँ, तो मैं ये सब आपको दिखाऊंगा अभी. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. आई एम रेडी टू क्लीन माय फेस. सो या, first I would like to apply this Cetaphil cleanser, which is very much good and I really love to apply this. I'm gonna take some, बहुत ज़्यादा ही ले लेता है. Every single day I do this, like ऐसे ही कर लेता हूँ मैं. After that I apply on my face and I clean up very nicely my neck because neck is important. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक यार, कभी भी अवॉइड मत करना, नहीं तो अगर आपका वो पिगमेंटेशन हो जाएगा ना, तो यू कैन सी माई नेक हियर ऐसा डार्क करके, बिकॉज मैंने अपना नेक का कुछ कैरी नहीं किया था तो ऐसे डार्क करके आ जाएगा. सो डोंट अवॉइड योर नेक. आई ऑलवेज अप्लाई माई ईयर बिकॉज यू नो व्हाट, कभी कभी क्या होता है आप फेस में लगाते आपको फेस ब्राइट हो जाता है, बट ईयर आपका क्या हो जाता है, जो डार्क कम्प्लेक्शन है वैसे ही रह जाता है. सो आई थिंक यू शुड टेक केयर ऑफ योर नेक. दिस टू बोथ इज इंपॉर्टेंट. जब भी आप कुछ भी लगाएंगे, डोंट फॉरगेट योर नेक एंड योर ईयर. ओके, know what, you have to like massage for a minute. अच्छा से इसको रगड़ना पड़ेगा ताकि जितना भी है गंदा सब निकल के आ जाए बाहर, तभी ना आपको क्लीननेस मिलेगा. सो यू नो गाइज, यू मस्ट बी थिंकिंग दैट हाँ ये इतना कर रहा है, बट एक्चुअली आई डू दिस बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि मेरा फेस में कुछ मॉर्निंग को पिंपल्स हो जाए, कुछ डस्ट वगैरह डेट माई स्किन कैन ब्रीथ. एंड रात को स्पेशली स्किन को बहुत रिलैक्सेशन चाहिए बिकॉज आपका स्किन तभी बहुत ग्लो करेगा जब आप अगर रात को अगर ब्यूटीफुली उसको क्लीन रख के सो जाओगे. After that, what I'll do is I'll take some rose water. You know, I love to apply rose water. I'll take some rose water and spray it into my face. Spit it off again. No, it's a Johnson's baby cream. I'm gonna scrub it. If you don't have this, you can use your any kind of moisturizer because I don't know why, but I love to apply moisturizer because इससे ना आपका फेस में प्लमनेस आता है. जब भी मैं यूज़ करता हूँ, मेरे साथ ही होता है या सबके साथ भी होता है, बट मैं जब भी मॉइस्चराइजर से थोड़ा मसाज कर लेता हूँ ना, देन आई वाइप इट ऑफ, तो मुझे ना थोड़ा प्लमनेस उसमें दिखाई देता है. सो यहाँ पे मैंने स्लोली ऑलमोस्ट कर दिया है. यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रब कर टाइप का करूँगा. Now I'm gonna take some olive oil. Olive oil is the best. तो अभी विंटर सीजन चल रहा है ना, so I apply olive oil because olive oil से अगर आप मसाज करोगे ना तो आपका फेस बहुत मॉइस्चराइज रहता है इन विंटर. After that, I'm gonna use this toner. It's from Faces Canada. You can see it here. I'm gonna keep it for a while. I'll do the same. Take some aloe vera gel now. So ज़्यादा नहीं, थोड़ा देना है, थोड़ा अमाउंट में मैंने ले लिया. And then I'll just apply. So guys, that's it. I hope you like the video. So guys, यही मैं करता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करता हूँ. अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ से थोड़ा कुछ स्किप कर लीजिएगा. आई हैव अप्लाइड एलोवेरा जेल, सो वो आप स्किप कर सकते हो. एंड बट गाइस, हमेशा सोने से पहले
मैं तो यही करता हूँ यार, बिकॉज मुझे तो रिलैक्सेशन चाहिए ताकि मैं सो जाऊँ तो तब मेरा फेस मॉर्निंग को और ग्लो करे, बिकॉज अगर डर रहेगा तो मॉर्निंग को कभी ग्लो नहीं होगा और आपको डर लगेगा फेस. सो आई थिंक दिस थिंग्स आर माई फेवरेट एंड आई ऑलवेज अप्लाई दैट. सो गाइज ये सभी मैं लगाता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. एंड गाइज दैट्स इट. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द video, please do like, subscribe and share, and yes, don't forget to click the bell button to see my new and latest video for first. And guys, I hope to see you on my next video. Till then, bye bye.